Okay, so question 16 can also be done in an alternative way. That is really shortcut method. I wanted to tell you at later stages, but I'm telling it to you right now. Okay, so how can we do it? Force is mass into acceleration. Mass is force upon acceleration. Force is force. Acceleration is what? Velocity by time, right? तो ये हो गया F T upon V. तो ये हो गया M is equal to F1 T1 V minus 1. खत्म. ऑप्शन नंबर भी आ गया. तो ऐसा भी होता है और एक मेथड भी है, बट बिकॉज वी आर इन द इनिशियल स्टेजेस एंड वी वांट टू यूज डायमेंशनल एनालिसिस एज मच एज पॉसिबल, बाद में ये हम धीरे धीरे डायमेंशन छोड़ देंगे एंड वी विल कम विद दिस सिंपल ट्रिक्स. गुड. तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी आप फाइंड कर सकते हो. सिंपल थिंग, इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट एट ऑल.